नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक में। और आज तक में हमारे साथ है तुषार और सीरत, जो अपनी अपकमिंग फिल्म मारिच के बारे में हमसे बात करने वाले हैं। हेलो, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रमोशन का कैसा स्पीयर कैसा चल रहा है? शुरू हो गया दौड़, शुरू हो गया। मतलब इट्स अ मैराथन प्रमोशन, आप तो जानती हैं। मज़ा आ रहा है लेकिन, क्योंकि एक अलग सिरे से हो रहा है, अलग फिल्म के लिए, अलग कैरेक्टर के लिए। एंड व्हाट डू यू थिंक? I think it's very very exciting because एक तो हमने अपनी तरफ से as actors, as the producer and the team entirely has done of course their best, but the anticipation of how it will be received by the audience is what the entire team, you know, finally waits for, and the moment has arrived. So we're extremely excited, happy, and we're looking forward to what, you know, everyone has to say. ट्रेलर बहुत पसंद किया जा रहा है, एंड द सस्पेंस जो थ्रिलर है उसको और भी मज़ा आ रहा है सोचने में और ऐसा गेस करने में। व्हाट वाज द रिस्पांस दैट यू ऑल रिसीव्ड फॉर द ट्रेलर? वेल, हम तो इनसाइडर्स हैं तो हमको तो अच्छा ही बोलेंगे, बट आई बिलीव द व्यूज़ आर वेरी हाई। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे तो आई वेंट वायरल ऑलमोस्ट। सो आई एम फीलिंग क्वाइट ग्रेटिफाइड। जो लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन असली बैरोमीटर तो जनता होती है, जो फ्राइडे को ही डिसाइड करती है। क्योंकि आज तो सब कुछ बहुत, आजकल बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। फ्राइडे को ही पता लगता कि आप मतलब कहाँ खड़े हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर रिएक्शन। एनी जिटर्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? ऑफ कोर्स जिटर्स नहीं होंगे तो मतलब आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इस फिल्म को लेकर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की सब ने। तो जिटर्स का होना ज़ाहिर है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को इसका ड्यू मिले जो ये डिज़र्व करती है। सीरत, आपका ये पहली मूवी है हिंदी हिंदी बेल्ट बॉलीवुड में मैं बोलूँगी। तो पहले तो आपने ये फिल्म क्यों चूज़ की, और करने के बाद कैसा लगा? Well, मैंने film इसलिए choose की because after all the films that I had heard, I felt this was a character which I could resonate with, I could connect to, and I feel like she had something to say, a message to put across to the audience. It's of course upon to the audience कि आपको character पसंद आए या आपको नहीं आए, but अगर एक impact पड़ जाता है, तो that's what I'm looking for as an artist, to play roles which, you know, which evoke a feeling within the viewers. That's one, and two was the universe of this film. खाली मेरा कैरेक्टर अकेला नहीं, बट सबका, द इंटायर यूनिट, everyone has been written so layered, and there was so much that was coming together, you know. It just seemed, even on a narration, I took a little time to understand what was happening. I kept going back to, you know, because the pace was literally that even. So I realized if it's doing this to me as an actor, when I've heard the whole story, then this may just do some goosebumps to people watching, and that's why I made a very instinctive decision and I took this call. आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बात, मतलब बहुत बातें हो रही है उनके, उसके बारे में बताइए। नेगेटिव शेड बता रहे हैं लोग, तो आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। ऑफ कोर्स एज पीपल आई लाइक टू बिलीव दैट नो वंस परफेक्ट, राइट? वी ऑल हैव आवर evils within us, you know, for the lack of a better word. But the reality is that, you know, when you're playing a character like this, you're not judging it. And at the same time, there are a lot of good sides to her as well. तो ये जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि जो सीन्स भी दिखने को आए हैं ट्रेलर में, तो वो, you know, what was the thought behind it, what was the ethos behind it, and just when you think that's what it is, it changes to, you know, a completely different reason. So yeah. तुषार, दिस इज द सेकेंड टाइम आप एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। लास्ट खाकी में आपने किया था, और ये कॉप के यूनिफॉर्म में, वो अटायर में आके आपको वापस कैसा लगा इतने सालों बाद? एंड हाउ डिफरेंट इज दिस देन द वन दैट यू हैव प्लेड बिफोर? ऐसा कोई मतलब डेजा वू हुआ नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है खाकी के कैरेक्टर से। वो तो एक नया कॉप था जो मतलब सीखना शुरू कर रहा है वो, तो ही इज़ वेरी बाय द बुक और बिकम्स अ मैन
विथ हिज एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के साथ जो होता है खाकी की स्टोरी में, उससे उसका भी एक मतलब वो कह सकते हैं ओरिएंटेशन हो जाता है इनटू द रियल वर्ल्ड। इसमें ये शख्स, ये व्यक्ति, ही इज़ वेरी रियल वर्ल्ड, मतलब कि उस सिस्टम से एक्लाइमेटाइज्ड है ऑलरेडी। मतलब वो जानता है कि केसेस को कभी कभी क्लोज करने में ही भलाई है, रादर देन प्रोलॉन्गिंग इट एंड सॉल्विंग इट। एंड स्ट्रीट मास्ट स्मार्टनेस है, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब यू कुड से a little bit of a flirt also, though he's a married man. So मतलब थोड़ी ग्रे शेड्स हैं इस कैरेक्टर में, जो आप आम आम दुनिया में आप मिलेंगे ऐसे लोगों के साथ, एंड ही इज़ लिटिल रफ एंड टफ। ही इज़ वेरी वेरी डिटर्मिन्ड कि जो केस उसने ली है वो क्रिमिनल, उस क्रिमिनल को वो 100% पकड़े, उसको सज़ा दिलवाए। सो ही इज़ गॉट अग्रेशन ऑल्सो, और ऑनेस्टी भी है काम की तरफ, सो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन ऑफ कोर्स उसका एक तौर पर आप कह सकते हैं एक रिडेम्पशन भी होता है विद ऑल दीज डिफरेंट फैसेट्स टू हिज पर्सनैलिटी। ही हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में कहूँगा नहीं, बट फिल्म में उसका एक अवेकनिंग, एक रिडेम्पशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर कैरेक्टर ग्राफ चेंज होते रहता है। मैंने सुना है कि आपने यू हैड टू पुट ऑन वेट, आपने वेट पुट ऑन किया है बहुत सारा। I was suggested to put on weight. I was not something that I had to do. You No, want to? nobody likes to put on. So even you were. Well, I was just coming out of another film, but we'll come to that. No, no, continue. Continue. No, I was a little. I'm playing a different character in one of the other movies where I'm expected to be a lot more toned. But that's the irony, right? It's a top model character, and just when you expect that the director would say कि आप zero size या आप इस inches में, that was not the brief. It was like, that is her profession, but she must look as relatable at the same time. So again, it's the thought process कि आप just because she's a model doesn't mean she has to be extremely, yeah, you can be your healthiest best, whatever that is, whatever weight that is. So I did work around those lines as well physically, yeah, for the character. Yeah, as I said, I was suggested to put on weight, not like a lot of weight, but enough to look like a more realistic cop, because not all cops are lean and mean and हीरो मटेरियल, सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही है, नॉर्मल लोग हैं। तो द डायरेक्टर वांटेड टू फिल्म दिस मूवी इन अ मोर रियलिस्टिक मैनर। सो ही सेड कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप जैसा जितना आप मतलब पतले लगते हो फिल्मों में, लीन लगते हो, वैसे ही लगो, थोड़ा वेट पुट ऑन करो ताकि आप थोड़े आम आदमी की तरह लगो, एक आम कॉप की तरह लगो जो रेगुलरली आप देखते हैं बाहर, जो हमारी रखवाली करते हैं। सो दैट वाज द आइडिया। सो आई गेन्ड अराउंड 10 pounds. Was it easy? इट वॉज वेरी इजी बिकॉज आई फेल इल। आई वॉज इल। फिल्म की शूटिंग के पहले, शुरू होने से पहले मैं बीमार पड़ गया था, तो उस वक्त तो वर्कआउट कर नहीं पा रहा था, तो ऑटोमेटिकली रोटी चावल खाना भी शुरू कर दिया था टू ऐड सम कार्ब्स, बिकॉज आई वॉज इन माई इम्यूनिटी वॉज वेरी लो। ये कोविड के टाइम की बात नहीं है, इसके बाद या तो धीरे धीरे वेट अपने आप ही बढ़ गया। एंड बट घटाना इजी था। उसके बाद हाँ, वो अपने आप ही घट गया, बिकॉज मतलब वर्कआउट शुरू हो गए और खाना पीना यूजुअल डाइट में हो Tushar गया। isn't working out, then there's so much to look after also, no? He's a producer and So, actor. but when you're stressed out, they say you eat more, तो आपको और भी mindful रहना पड़ता है। तो I came back to my normal routine and my normal workouts after the movie was over, and I think even during the making of the movie only, I was working out, but it's like I wasn't really focusing on losing weight. So I just changed, I tweaked my diet a little bit, and I got into more cardio intensive workouts जैसे फिल्म खत्म हो गई। सर मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा और उसमें आपने वो दिस और दैट किया था, और उसमें पहला क्वेश्चन था एक्टिंग या प्रोड्यूसर, बट आपने एक्टिंग चूज किया, आपने प्रोड्यूसर चूज नहीं किया। यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू वेरी डूइंग वेरी वेल एज अ प्रोड्यूसर। what is that one thing that you miss about everything that you're doing right now As a producer, as a producer? what is the one thing that I miss? Yeah. Peace of mind. As a producer, there's no peace of mind. There's always unpredictability, uncertainty. आपको पता नहीं होता कि next क्या होने वाला है, और you have to be strong no matter what the circumstances are, no matter what the weather is, no matter what the pandemic situation is, no matter what the cinema situation is, no matter the availability of your co-stars. Everything is, no, not just you, everybody.
सारे पैरामीटर्स आपके सर पे होते हैं और आपको उन सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, सॉल्व करते रहना पड़ता है. बट इट्स फन, इट्स अ रॉकी रोड, बट इवेंचुअली अगर आपका सच और साहस जिसके मन में हो, अंत में जीत उसी की है. But if your center, if your captain of the ship is sorted, then everything just flows, you know. Because as a producer, he's literally managing a whole show, so he won't compliment himself. But yeah, Maarrich has happened because he was in his place, and so was Captain of he. a ship, but That the he- ship should not turn out to be a Titanic that it reaches won't and sink, that hits an Tushar. iceberg. I promise. This one's I'm Yeah, gonna but there are sink. icebergs everywhere, na? So you have to dodge them. There are. Yeah. दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू तुषार. आपको लोग ऐसे रोल में भी पसंद करते हैं, आपने बहुत पहले भी किया है सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस हॉरर, बहुत सारे फिल्म वैसे किए हैं, बट आपके कॉमेडी रोल्स को लोग बहुत पसंद करते हैं. ऐसा कोई भी है जो चीज, जो मूवी है जो आपकी आने वाली है जिसमें आपको वो अवतार में देखेंगे लोग? There is one script that I mean, there are lots of scripts that I've said yes to, but वो materialize भी होनी चाहिए. I mean, some horror comedies are there, then some serious roles are there. Gangsters का gangster वाली script भी हाँ की है मैंने किसी कुछ टाइम पहले, but कभी कभी वो बनते बनते वो बात मतलब बनती नहीं है. So it's not in my control. So I'm hoping I get to do something which is more comic and not just Golmaal, something different probably. And let's see, fingers crossed. We all are hoping Yes. जल्दी हो जाए तो हम भी देख लें. Yes, yes. सीरत, what about you? आपका क्या नेक्स्ट? Well, I'm shooting a film with Dil Raju. It's a dance-based movie, a dance musical. No, Ravi Teja's not in it. But very, very interesting. Again, you know, the kind of space. It's what I've trained as a youngster. You know, as a dancer. So I think you'll get to see all of that finally in front of you in the most commercial way when you have a producer like that. Well, on that note, thank you so much हमसे बात करने के लिए, and all the very best. Looking forward to the film. Thank you.